Good evening, everyone. Am I audible? Okay. How are you all? ठीक है. Preparation कैसा चल रहा है? चल. Guys, I welcome you all to the classes, okay, of the Dikshant IAS. And if you are looking at the screen, आज हम यहाँ पे एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं. And I am going to take your classes for the reasoning portion of your CSAT, okay. तो before starting, सबसे पहले ये बता दो कि आप लोगों को CSAT के बारे में क्या आइडिया है? Anyone having any idea regarding this particular paper? हाँ, वो तो सबको पता है, Civil Services Aptitude Test. Okay, that is going to be the full form of it. Okay, anyone? CSAT के बारे में आपको क्या आइडिया है? What do you know about this particular paper? Yes? Qualifying. It's a qualifying paper. And how much you have to score? 33%. Very good. Okay. So अच्छा कब लागू किया गया था? When it was introduced? Yes, very good. 2011. And then? Great. Okay. So guys, look here first. Looking at the CSAT only. Okay. So what we are going to do in this session, I am going to start with the reasoning. But before looking at the reasoning, let me give you a brief introduction about this particular paper. तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए what we are going to cover. So guys, I am going to tell you CSAT क्या होता है, ठीक है? या for example, bit of information about this particular paper. We are going to look at the syllabus as well. थोड़ा सा मैं P/Q analysis के बारे में भी बात करूंगा, and I am going to talk about the strategy as well. Okay? So looking at this CSAT paper. Just a second. Is this working, guys? Just a second. So guys, looking at this CSAT paper, it is also referred to as GS2, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं anyone? Civil Services Aptitude Test. Second thing that you should have an idea, it is just going to be a qualifying paper. You just have to score 33% in this particular paper. And looking at the CSAT only, guys, if you are looking at the screen, this is going to be the syllabus overview. Okay, पूरा ध्यान से देखो. Looking at the syllabus first, what I am going to have? We are going to have the comprehension. We are going to have the basic numeracy. यहाँ पे class 10th level तक देखने को मिलता है. Apart from that, guys, we are also going to have the general mental ability. We are going to have the data interpretation and sufficiency. ठीक है, ये from last 3 to 4 years, this particular part is going to be very important. Data interpretation and sufficiency. Not just that, we have to look at the decision making and problem solving. We have to look at the interpersonal skills. Okay, although इसका थोड़ा सा रोल कम रहता है. Apart from that, this logical reasoning and analytical ability. What used to be happen before this introduction of CSAT paper? ऐसा देखने को मिल रहा था, the people who qualified this civil services examination, okay, जब वो फील्ड वर्क में आते थे तो डिसीजन मेकिंग उनका काफी कम देखने को मिल रहा था, because they used to go with that GS paper first, जहां पे mostly okay एक मेमोराइजिंग पावर देखने को मिलता है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा. Okay, so to check the decision making, to check the aptitude of the people, okay, which are going to be suited best for this civil services, तब जाके यहाँ पे ये जो आपका CSAT पेपर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था. So kindly remember this. ये आपका broad definition में देखने को मिलता है when I look at the syllabus. But when I look at this syllabus, guys, mostly यहाँ पे तीन ही broad divisions है. First, it is going to be the reading comprehension. Here you are going to have a passage, and then you have to solve those passages. Second, guys, it is going to be this reasoning part, and then third, it is going to be this quantitative aptitude portion. This is going to be easy, and even this is going to be easy. What people are scared of? They are scared of this one, quantitative aptitude, जो आपका maths portion रहता है. And most of the times, what I have seen, जब यहाँ से ज्यादा questions आते हैं, जब quantitative aptitude से ज्यादा questions आते हैं, you are going to see mostly लोगों को लगता है the CSAT paper was tough. In total, you are going to have 80 questions. कितने questions रहेंगे guys?
80 questions, and per question you are going to see there is going to be this 2.5 marks. Please remember this, and there is going to be the negative marking as well. Okay, तो जब आप यहाँ पे स्कोर करते हो, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, you have to score this 66.67 marks. इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे. That means you have to score 33%. By solving reading comprehension and by solving the reasoning questions, okay, easily you can qualify or you can clear this CSAT paper. Okay, moving forward guys, so याद रखिएगा, moving forward, and when I look at the comprehension, okay, and most of the people are comfortable with this particular portion, that is going to be this reading comprehension. अगर आप देखना चाहते हो कि reading comprehension कैसे होते हैं, okay, these are going to be the passages, there will be short passages and there are going to be the long passages. Okay, this is the short passage, passage ऐसे आएगा, and then there is going to be this, ठीक है, यहाँ पे assumption के बारे में पूछा गया है, and then you are going to see these options and you have to solve this. Now for example, you are going to have the long passages, so please remember this. This will be included in your reading comprehension. And if I look at the comprehension part guys, can you see this one? Okay, this section has almost 30 to 35% weightage in this CSAT paper. That means on an average, if I look at the RC or reading comprehension, 25 to 30 questions are going to come from this particular portion. So reading comprehension को आप strong कैसे कर सकते हैं? ठीक है, the only mantra is you have to read a lot. Okay, that's what I believe. For example, daily newspapers, magazines पढ़ते हैं. या for example, we have the GS knowledge as well. या for example, we are going to have the idea of keywords as well. Okay, such as logical inference क्या होता है, या for example assumption क्या होता है, okay, implication क्या होता है. तो by going through these details or going through these keywords, you are going to score good in your reading comprehension. Please remember this. So 25 to 30 questions are going to come from the reading comprehension. Okay, and comprehensions कैसे होते हैं? Like this, passages. Passage, this is going to be the short passage and this is going to be the long passage. Now once you have looked at this one guys, looking at the basic numeracy, okay, you're going to have the number system, which I believe is very important. You're going to have the fractions, elementary algebra, LCM, HCF. इनका हमें application देखने को मिलता है. Average, we have to look at the application. Percentage, order of magnitude, okay, profit, loss and discount, ratio, proportion, partnership and mixture. Okay, this is going to be included in your basic numeracy. Apart from that, we are going to have the time and work, speed, time and distance, simple interest, compound interest. Okay, we are going to have the permutation and combination. Most of the people, they are scared of this one, permutation and combination, as well as probability. Sets and functions, clocks and calendars guys, area and perimeter, sequence and series. Okay, now once you have looked at this one guys, this is going to be the syllabus for the general mental ability. Okay, like for example, we are going to have the analogy, we are going to have the classification, we are going to have the series, we are going to have the coding and decoding, we are going to have sequencing and formation, direction and distance test यहाँ पे रहता है. We are going to have the blood relation, we are going to have the logical Venn diagrams, we are going to have the setting arrangement guys, we are going to have the cubes and dice. Okay, yeah, for example, we are going to have this verification of truth या फिर live statements, although अभी तक यहाँ से questions देखने को नहीं मिले हैं. Puzzles, very important, you have to solve these questions. Routes and networks guys, time sequence test, ranking test या फिर order of ranking, that is very important. Problems based on age, and mostly regarding this reasoning guys, you should have an idea or you should be able to solve these questions with the help of tricks as well. Okay, rather than going with the long method, क्योंकि time आपके पास काफी कम होता है उस समय पे. Then once you have looked at this one, okay, guys, data interpretation, DI, very important. Okay, study of graphs, tables, pie charts, bar charts, okay, line graphs, this you have to cover in your data interpretation. वहां पे ये सब दिया जाता है and then you have to solve the problems. Moving forward, okay, you're going to have the syllogism guys. It is going to be very important. You can solve the syllogism with the help of Venn diagrams. Okay, statements and arguments, not that important. Okay,
So please have an idea of this one. Now, if I look at the UPSC CSAT previous year question paper, okay, when we look at or when we analyze the trend, what we get to see, guys, you can look at the screen over here. So we are seeing from 2013 to 2021. Okay, these are the number of questions that have been asked from your comprehension portion. When I look at the 2013 to 2021, these are the number of questions that have been asked from your basic numeracy, data interpretation, and sufficiency. Okay, let me show you this one over here. Can you see this one, guys? UPSC CSAT. Please have a look at this one. UPSC CSAT questions distribution 2014 to 2024. So if I look at this one, guys, can you see this one? Topic यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं. We are taking the 3 only. First, it is going to be the maths. Second, it is going to be the comprehension, and third one, it is going to be the reasoning. Look here. 2014, you can see 15, 15, 24, 21, 31, okay, 26, 20, 20, 40 questions. So at that point of time, people came out and they told that the CSAT paper was the toughest. Okay, even in 2021 as well, 2022, 2023. Okay, so whenever we are seeing more number of questions are coming from the quantitative aptitude portion or from the maths portion, लोगों को क्या लगता है कि जो पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट था. If I look at the comprehension, you can look at the screen over here, guys. What we get to see, हम यहाँ पे देख रहे हैं 15, 15, 24, 21, okay, sorry, 32, 30, 27, 29, 26, 30, 25, 27, 27, 27, 27. So you can have an idea from the comprehension portion. Okay, each year you can expect 25 to 30 questions. So if you are good with the comprehension, okay, you can qualify the CSAT paper. And then if you are having an edge of the reasoning as well, okay, you have an idea of blood relations, you have an idea of syllogism, you have an idea of series, okay, you have an idea of calendars. So easily you can tackle this particular paper. So looking at the reasoning, guys, you can see 33, 35, 29. 30 questions, 23 questions, 24, 15, 18, 19, 14 and 16 questions. So जब भी reasoning वाले portion से questions कम होते हैं, we get to see the aspirants come out and they say that the paper was difficult. So जब reasoning में अच्छे खासे questions आते हैं, when from this portion, ठीक है, जब हम देखते हैं the number of questions increase, what we get to see, the more people are going to qualify the CSAT paper. So please remember this. These are going to be the 3 important portions, okay, which you have to tackle or which you have to deal when looking at the CSAT paper. आराम से सुनना. Now looking at the UPSC 2023 CSAT paper, guys, can you see this one? Reading comprehension 27, reasoning ability 13 questions, basic numeracy and maths, okay, including data sufficiency, 40 questions had asked from came from this particular portion. Moving forward, even when I look at the UPSC 2025 CSAT paper, guys, reading comprehension 29 questions, okay, reasoning ability 15 to 17, and from maths portion, guys, 34 to 36 questions. That means the RC is somewhat, अगर मैं देखूं, constant यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, reasoning वाले portion में कभी उधर इधर हो रहा है. Even we can look at the basic numeracy and maths portion, guys. From last couple of years, we get to see more than 30 questions are coming from this particular portion. So once you have looked at this one, guys, what we are going to see, okay, यहाँ देखो पहले. So अब आप कहेंगे, sir, what should be our strategy for this CSAT paper? To be very honest, okay. सबसे पहले एक काम याद करिएगा, okay, you can follow one book, okay, एक बुक को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे वो एस चांद की हो, चाहे वो पांडे जी की हो, या फॉर एग्जांपल अग्रवाल की बुक हो, ओके, गेट अ बेसिक बुक एंड देन व्हाट यू शुड डू, ओके, हर दिन या फिर मंथली जो है 10 to 15 आवर्स dedicate those 10 to 15 hours for the CSAT paper only. Okay, you're looking at the maths portion, you're looking at the reasoning portion, and you're solving those problems as well, so that you are in touch, and tomorrow while sitting in the examination you will be easily or you will be comfortable with those questions, okay, while writing the paper. So can you see some, guys? Follow one book
Okay, solve PYQs. Second, analysis, या फिर you can go with the mock test as well. Study 10 to 15 hours per month. Now, for example, guys, know the CSAT syllabus. Always remember that. Okay, when you have this syllabus, follow that syllabus. When you know the topics, from these topics, the questions are going to come. Practice questions from those particular topics. Apart from that, guys, time management. ठीक है, ये तो आपके एंड पे है कि आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे. बट व्हाट आई सजेस्ट, इतना तो एक बेसिक प्रिपरेशन होना चाहिए फॉर द CSAT एग्जाम. Now, what we are going to do, guys? Okay, we are going to start with this CSAT, and I'm going to take the reasoning portion. आप पहले अपने notes पे note down कर दो. Okay, CSAT reasoning. ठीक है, सबने लिखा? CSAT reasoning. ठीक है, सबने लिखा? Okay, look here, guys. Looking at the reasoning portion, okay, what you should have an idea. The first thing, okay, what you should remember, what are going to be the topics that we are going to deal in the reasoning? Anyone having any idea what are going to be the topics that you are going to study in this reasoning portion? Anyone? Yes, reasoning में कौन कौन सा टॉपिक देखने को मिलेगा? चलो ठीक है, सबसे पहले let me go with the series. नंबर सीरीज, चाहे वो लेटर सीरीज हो या कुछ. ओके, एनीवन? सेकंड, व्हाट इज गोइंग टू बी द टॉपिक दैट यू, वेरी गुड, ब्लड रिलेशन, नॉट जस्ट ब्लड, ब्लड रिलेशन. ओके, वेरी गुड, कैलेंडर, और वेरी गुड, क्लॉक्स, क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम्स. एनीवन एल्स? यस? नहीं, time and distance, that will be covered in your maths portion. Okay, anyone? Puzzles, very good. Or very good, syllogism will be there. Anyone? Okay. और कौन सा टॉपिक रहेगा? Anyone? Yes? Anyone? Coding, decoding. Coding, decoding. Now, for example, we are going to have, guys, topics such as, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ coding, decoding, we are going to see the problems based on age as well. Not just that, inserting a figure, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा. Okay, हो सके तो ये नोट डाउन कर लो, एक माइंड में रख लो. What are going to be the topics that we are going to deal with? Okay, लिखो पहले. Topics that we are going to deal. Okay, we are going to look at the series. We are going to look at the analogy, classification. Although analogy and classification, they are not that important, but we are going to deal with that. Series, coding, decoding, direction and distance test, direction and distance test, direction and distance test. Sitting arrangement will be there, blood relations are going to be there, logical Venn diagrams are going to be there, cubes and dice we are going to deal with. Extra, हाँ, setting arrangement भी लिख सकते हो. You can go with the setting arrangement. Guys, what I am going to do with this reasoning is that, okay, look here. यहाँ पे हर एक टॉपिक को ना, we will be dealing with each and every topic, and we will start from the basics and we will go with the advanced level. That means the questions that I have come up with, they are going to be level first questions, level second questions, and level third questions. Okay,
लेवल फर्स्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, एंड दे विल बी कंफर्टेबल. And then we are going to look at the level second and the level third. Once we are gone with all the levels, we are going to go with the PYQs as well. Like for example, if we are looking at this series topic, we will go with level first, level second and level third. Okay, and then finally we are going to solve all the PYQs as well. Apart from that, I am going to give you the homework as well. कुछ questions रहेंगे that you people have to solve. Okay, ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे का. Okay, half an hour का एक homework रहेगा आप लोगों के लिए that you people have to solve by yourself. अगर नहीं हो रहा है तो I am going to help there as well. And for each and every question, I am going to give you, for example, if you are going with the level first questions, okay, you are going to get around 30 seconds of time. For level second questions, you are going to get around 45 seconds of time. And for level third questions, okay, जिनका difficulty level थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, but I don't believe here in CSAT you have those kind of questions as compared to when we look at the banking exams या फिर जो और भी exams होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा level कम रहता है रीजनिंग का या फिर मैथ्स पोर्शन का. So for the level third you are going to get around 1 minute and try to solve all those questions. So once we have looked at this one guys, okay, so एक idea हमें मिल गया, puzzles है, ranking test, okay, problems based on age. These all topics that we are going to cover in our reasoning portion. So mind में बिठा लेना. And when I look at the reasoning portion, guys, ठीक है, if you look at the screen, this is going to be highly important topic, coding and decoding. Because each year we are seeing the questions are going to come from the coding and decoding. Now, for example, when I look at this series, guys, around 2 to 3 questions each year you are going to see are going to come from this series portion. Not just that, if I look at the blood relations, guys, okay, even this is going to be highly important one. Now, for example, when I look at the direction and distance test. Now, for example, if I look at the syllogism, okay, so we can expect, and when we are going to look at these particular topics, you're going to see while solving the PYQs, each year we are going to see the questions are going to come from these particular topics. So please remember this, guys. These are going to be the topics that we are going to cover in our reasoning. So let's start with the series. Heading with the topic number first, series. Topic number first, series. Just a second. Look here, guys. Okay. When we look at the pattern या जो हमने यहाँ पे लिखा है, okay. So if I look at the 5, 10, 15, 25, and then अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे what is going to be the next term, what is going to be answer, guys? Yes, it is going to be 30, right? It is going to be the 30. The reason is that क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, okay, from term to term we are seeing यहाँ पे it is going to be the +5. 5 is being added. ठीक है. Similarly, if I look at this one, 10,000, 1,000, 100, and then you are going to see what is going to be the next term. It is going to be the 10. Here you are going to see कि यहाँ पे division हो रहा है by 10. Okay, 10,000 divided by 10,000, 1,000 divided by 10, 100. So similarly, 100 divided by 10 is equal to 10. So if I look at the series, that means, guys, series follows a different set of pattern which is based on some rules. So if I look at this series, so guys, kindly remember this, series follow a pattern, follow a pattern, follow a pattern which is based on some rules. For example, if I look at this one, guys,
सीरीज नंबर फर्स्ट, हियर व्हाट वी गेट टू सी, हमेशा यहाँ पे 5 5 ऐड हो रहा है, राइट? Like for example, 5 plus 5 is equal to 10, 10 plus 5 is equal to 15. And if I look at the series number second over the guys, even here as well, we are seeing a pattern follow हो रहा है. That means I am seeing 10,000, then I am looking at this one, the second term, that is going to be 1,000, the third term is going to be 100, and the fourth term, obviously it is going to be the 10. Here we are seeing it is going to be follow a pattern. Here यहाँ पे टर्म क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, डिवीजन बाय 10 हो रहा है. फॉर एग्जांपल आई एम कमिंग विद दिस 2 3 देन 5 देन 7 देन 11. गाइस व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टर्म, एनीवन? Why 13? Very good, it's a prime number series. So that means even here as well, यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है. ये पहला लिखो यहाँ पे, सीरीज. Series follows a certain pattern. Series follow a pattern which is based on some rules. Which is based on some rules. Which is based on some rules. So series follows a pattern which is based on some rules. Now guys, once we have looked at this one, and I told you, ये जो series है, it is going to be highly important topic, ठीक है, for your UPSC CSC prelims examination. So remember this, around 2 to 3 questions are going to come from the series portion only. Not just that, जब मैं यहाँ पे अब series के regarding देख रहा हूँ, ठीक है, guys, we are going to see when we look at the types of questions that are asked over here. यहाँ देखो पहले, when I look at the types of questions that are asked in series portion or series topic, types of questions. First type of question होगा guys, you will be asked, okay, to find the wrong term. Finding the wrong term. आपसे पूछा जाएगा that find the wrong term. Second type का question, if I look at this one, you will be asked find the missing term or find the next term. Second type, it is going to be the finding the missing term. Finding the missing term. Like for example, okay, I hope or I believe at least you have an idea of what are even numbers, what are odd numbers, or what are prime number series. Prime number पता है ना, ठीक है, they are going to have two factors, okay, 1 and the itself. Like 2, 3, 5, 7, 11, okay, 13, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर सीरीज में देखने को मिलते हैं. If I look at this one guys, अगर मैं आपसे ये कहूँ find the wrong term over here, imagine कर लो, this is the series over here, we are having 3, we are having 6, we are having 9, we are having, यहाँ पे मैंने लिख दिया 14, and then I am writing over 15 and then 18. This is the question. Like, मान लो, imagine, although इतना easy question आएगा नहीं. Okay, you have been asked find the wrong term in this particular series. The wrong term कौन सा रहेगा? Yes, it is going to be the 14 because यहाँ पे if I see ये 3 का multiple देखने को मिल रहा है. 3 multiplied by 1, 3 multiplied by 2, 3 multiplied by 3. So next term it is going to be the 3 multiplied by 4. That is going to be equal to 12. So please remember this. Okay, they might ask you these type of questions. For example, here find the wrong term. Okay, you have been given like this 4, then you have been given like this 9 over here. Okay, and then you have been given like this 15, 25, 36, and they are asking you find the wrong term. Zara batao how? Very good. Because if I look at this one, 4, it is going to be the square of 2. If I look at 9, it is going to be the square of 3.
After that, it should have been in the square of 4. So that means here it should have been 16. So please remember this. So they might ask you these kind of questions. Okay. Apart from that, find the missing term or find the next term. They might ask you like this. Find the missing term or find the next term. Like for example, if I look at this particular question, okay, imagine I have been given like this 9, okay, and then 18, and then 27, okay, and then I have been asked to find the fourth term. Simply it is going to be the 36, okay. So ये तुम्हें बस understand कराने के लिए आपको उनको बोल रहा हूँ. Now you have got an idea the types of questions that are going to be asked. Moving forward, guys, if I look at the various types of series, you are going to have the number series. कौन सी series रहेगी? Number series. Here you are going to see the numbers. Like for example, यहाँ पे आप देखेंगे 100, 200, 300, 400. Okay, this is going to be the number series. You are going to deal with the numbers only in this. Please remember this. किसके साथ डील करेंगे आप? Numbers के साथ डील करोगे. Like for example, if I look at this one, guys, this prime number series 2, 3, 5, 7, 11. Okay, the next one it is going to be the 13. This is going to be the number series. Second, we are going to have the letter series. Like for example, here you are going to have the alphabets like this: A, B, C, D, E, etc. Okay, letter series. Here you are going to deal with the letters. And please make sure, guys, आपको एक idea है letter series के regarding. Okay, like this. You have an idea regarding the letter series. Okay, guys. When we look at the A को हम relate करते हैं 1 के साथ. Similarly, B with 2. कभी कभार हम with 2 या फिर B beta. B with 2. C for 3. D 4 के साथ. E 5 के साथ. Okay. And if I look at this one, guys, E5, F6, ठीक है, F for 6, G7, H8. तो यहां से भी when I look at the coding and decoding, even at that point of time, this is going to be very important. We are going to have the 26 alphabets, and for that, ये आपका एक पूरा mind में होना चाहिए. A with 1, B with 2, okay, and if I look at the U21, UR21, okay, T20, या for example S19, मैं 13, okay, like this, M13, okay. So these are going to be the mnemonics that you should have an idea. So if there was this series like this, okay, A, D, G, okay, what is going to be the next one? Idea लगा लो. A, D, G. What is the A? 1. Okay, D plus 3 हुआ? Plus 3 हुआ कि नहीं हुआ? Okay, what is going to be the G? G is 7. Okay, plus 3 हुआ? ठीक है, plus 3 हो रहा है ना? Now, अब यहाँ पे 7 plus 3. The next one it is going to be the J. Please remember this. So this is going to be your letter series. For example, if I am going with E, okay, and then I have gone with simply, guys, J, okay, I have gone with O. What is going to be the next term? Anyone? What is going to be the next term? If I go with E, J, O, what is going to be the next term? Imagine kar lo. What is the value of E according to that? 5. Okay, right? 5 है ना? यहाँ पे plus 5 हो रहा है. What is the value of J? It is 10. Plus 5. What is the value of O? Anyone? 15. Now what is going to be the next one? Very good. It is going to be the T. T20. So kindly remember this. This is going to be the letter series. First it was number series. Now it is going to be the letter series. Please remember this, guys. Okay. So ये होता है दूसरे टाइप की series. Now if I look at the alphanumeric series, here you are going to have the alphabets as well as you are going to have the numbers. For example, E5.
ओके सिंपल अभी देखा हमने. ओके J10. For example, we are going to have the O15. So next one, what it is going to be the? It is going to be the T20. So can you see this one, guys? Over here, we are having the alphabet as well as the number as well. For example, I have been given the series A1, B2. Okay, यहाँ पे missing लगा दिया, and then I have been given the D4. Over here, what is going to come, guys? It is going to come C3. So when I look at the alphanumeric series, at that point of time, we are going to have the alphabets as well as we are going to have the numbers. Everyone is getting? Okay. So ये type की series हमें देखने को मिलती है. And then not just that, if I look at the types of questions asked, okay, we can have the prime number series. Mind में बिठा लेना. And when I look at the series, guys, you are going to have the AP arithmetic progression. You are going to have the geometric progression as well as prime number series, addition, subtraction. Mind में बिठा लेना. So if I look at the prime numbers, ठीक है, prime numbers are going to be those numbers which are going to have only two factors. एक तो number खुद और दूसरा second it is going to be the 1. Prime numbers 2, 3. Second, guys, it is going to be the 5. ठीक है, then 7, 9, it is going to be the 11, 13, it is going to be the 17, 19, etc. 23 फिर आएगा. Okay, so this is going to be the prime number series. So mostly when I have seen, when I look at the UPSC CSE examination or any other exam, okay, prime number series is going to be of utmost importance. Second, guys, you are going to have the addition series. क्या रहेगी? Addition series. For example, simple addition हो रहा है 6, 12, 18, 24. The next term obviously it is going to be the 30. Addition हो रहा है यहाँ पे. Okay. Now for example, we are seeing 50, 150, 250, 350. Okay. The next one is going to be the 450 addition series. Simply addition हो रहा है. Okay. या कोई fixed number होगा, that will be continuously added over here. Third, guys, subtraction series. For example, you have been given this 130 and then आपको दिया गया है 128 and then you are seeing 125. Okay, and then you are seeing 120. What is going to be the next term? Anyone? Can you see this one? एक pattern यहाँ पे follow हो रहा है. Yes? हाँ? हाँ 113 आएगा क्योंकि यहाँ पे it is going to be the prime number. Okay, because एक दो अगर हम और भी जाएंगे, can you see this one difference? What is the difference? 2. What is the difference, guys? 3. What is the difference? 5. So the next one, guys, it is going to be the 7. That means 113 subtraction series. Okay, kindly remember this. So in these series, what we are going to see, guys, okay, जो jump होगा वो काफी कम होगा. Like for example, if I look at the addition series, you can see, okay, 6 का कुछ एडिशन हो रहा है. बट व्हेन यू सी, अब यहाँ पे 6 है पहले, फिर यहाँ पे 18 है, ओके, फिर 54 आ रहा है, फिर कोई नंबर आ रहा है. इमेजिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. ओके, लाइक दिस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 18 मल्टीप्लाइड बाय 3, 54 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो रिमेंबर दैट जब जंप बड़ा होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू गो विद द मल्टीप्लीकेशन. वो याद रखिएगा. सो प्राइम नंबर सीरीज, एडिशन सीरीज, सबट्रैक्शन सीरीज, we are going to have the multiplication series. For example, यहाँ पे we are going to have the 10, we are going to have the 100, we are going to have the 1000, we are going to have the 10,000. Okay, what is going to be the next one? Anyone? Can you see this multiplication series? Look at the increase or look at the jump that you are going to see over here. 10 multiplied by 10, multiplied by 10, multiplied by 10. Now next one will be multiplied by 10. So you can see कितना यहाँ पे increase हो रहा है. Is everyone getting it? Okay. For example, आप simply ये जो multiplication series हो, ठीक है, we are going to look at the questions as well. If we are going to have the division series, कौन सी series रहेगी? Division. Now let's look at this particular series only. Okay, let's try to divide it. We are going to have the 10,000 divided कर लो 10 से. ठीक है, it is going to be the 1000
it is going to be then 100. The next one is going to be the 10. Even here as well, you are seeing a great jump. Okay, because what I am going to see, guys, I am finding over here the division by 10 at each and every step. Okay, kindly remember this. Now, once we have looked at this one, जब ये idea हमने ले लिया, yes, there is going to be this mixed series. What we are going to have? We are going to have the mixed series. For example, okay, one series I am seeing the squares of numbers. For example, okay, how let's take an example of prime numbers. Okay, उनके स्क्वायर का हम देख लेते हैं. For example, 2 square is equal to 4. Okay, थोड़ा सा स्पेस दे दिया. Then I am going to have the 9 over here. I am going to have the 25. I am going to have the 49. Okay, so this is one series. Okay, second, let me go with the series of even numbers over here. I am going to have over here, let me have 2. Okay, let me have 4 over here. Let me have 6 over here. Let me have 8 over here. Okay, so can you see this one? कुछ यहाँ पे एक दो सीरीज देखने को मिल रही है, उनका एक मिक्स देखने को मिल रहा है. ओके, इफ यू ट्राई टू रिलेट दीज टू, यहाँ पे फिर आपको एक बार आगे देखने को नहीं मिलेगा. इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो एनी काइंड ऑफ अ पैटर्न. बट हाँ, इफ आई फॉलो दिस वन, if I follow this one, if I follow this one, they are going to follow the pattern. And after this one, I am going to have 121 over here, because that is going to be the square of 11. Similarly, if I look at this one, 2 and 4, 4 and 6, 6 and 8, the next number, it is going to be the 10. Because I am following, one is going to be the even number series. And guys, एक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. Okay, squares of prime numbers. Is everyone getting it? This is going to be the kind of the mixed number series. So once we have looked at this one, let's start with the practice sessions. Let's start with some of the level first questions. Okay, heading with the वहाँ पे level first questions. And guys, you are going to get around 30 seconds of time for this level first questions. Okay, guys, find the wrong term in the series. Find the wrong term in the series. 7, 11, 13, then you are going to have the 15, 19, and then you have been given 23. Okay, tell me what is going to be the wrong number in this one. Yes, why? Very good. Okay, so guys, the wrong number or the wrong term over here, it is going to be this 15. Okay, it should have been the 17. Okay, let's try to solve this one. Ilko, find the next term in the series. 4, 9, 25, 49, 121, 169. Okay, please find the next one. Very good. How? 289? Because it is going to be the square of 17. Okay, here as well you are going to have the squares of prime number series. Looking at the 4, guys, it is going to be the square of 2. Looking at the 9, it is going to be the square of 3. Looking at the 5, 25, it is going to be the square of 5. Very good. Looking at the 49, it is going to be the square of 7. Very good. And then we are having the 11 square, 13 square is given, and then finally it is going to be the square of 17. That is going to be the 289. So this is going to be the answer. So please remember this. ये तो level first questions ही है. Okay, is everyone able to solve these questions, guys? Okay, चलो. Moving forward, okay, try to solve this one. 1, 9, 25. Okay, 49, 121. Easy है. Try to solve this one. Very good.
Yes, anyone? What is going to be the answer? How 81 कैसे आएगा? Very good. Here you are going to see it is going to be the squares of consecutive odd numbers. Odd numbers. Okay, so if I look at this one, guys, can you see this one? This is going to be the 1 square. Okay, then I am going to have 3 square, 5 square, 7 square. Okay, next one it is going to be the 9 square. That is going to be the 81. ये भी level first question ही था, ये भी easy ही था. Okay, let me see level 2 या फिर level 3 पे how you are going to perform. Okay, let's look at this one. 1, 4, 10, 22 and 46. Okay, try to solve this one. ये वाला solve करके दिखाओ. हाँ, A94, very good. Okay, let me see. हाँ, बाकी सब भी solve करो. You have the 30 seconds of time. हाँ, A. ओके, हाँ, ऑनलाइन भी बता दीजिए. यस, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? हाँ, एनीवन बताओ कृष्णा. यस सर. हाँ, वेरी, हाँ वो भी, बट हाँ व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे डिफरेंस देखिए उसको डबल कर सकते हैं. ठीक है, 1, 4 इनके बीच में डिफरेंस 3, देन 4 to 10 के बीच में डिफरेंस गाइस इसका डबल 6. ठीक है, डबल हो रहा है ना, द डिफरेंस इज बीइंग डबल्ड ओवर हियर. Then if I look at the 10 to 22, difference double हो रहा है, that is going to be the 12. Then if I look at this one guys, 22 to 46, what we get to see, इनके बीच का difference 24. Then simply, okay, what we can do, 24 का difference double करो, that is going to be the 48. So 46 plus 48, the answer is going to be the 94. सिंपल. ओके, यहां पे व्हाट वी आर सीइंग इज यहां पे डिफरेंस डबल हो रहा है. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. सबको ये सभी सॉल्व कर पा रहे हैं? इज एवरीवन एबल टू सॉल्व दिस? या फिर मैं ग्रुपिंग बना लूं, 3-3 का ग्रुप बना लूं. ओके, कोई वीक है रीजनिंग में या सीरीज में? एनीवन? हाँ, सच बताओ, बी ऑनेस्ट. ओके, हाँ, आप आगे आ जाओ फिर कृष्णा. ओके, इनके साइड में आ जाओ, इनके साइड में आ जाओ. कम हियर, इनके साइड में आ जाओ. एनीवन? कोई और वीक है? कोई और वीक है रीजनिंग में? हाँ, बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो हेल्प करो एक दूसरे को. लेट मी सी, मैं वही टाइम दे दूंगा हर एक का. ठीक है, ओके, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा, कोई और नहीं बोलेगा किसी और के बिहाफ पे. ओके, हाँ, ट्राई टू सॉल्व दिस वन. क्वेश्चन नंबर 5, 2, 15, 41, 80. 2, 15, 41, 80. Yes. 2, 15, simply 2, 15, 41, 80. Try to find some relation ना. Okay, इनके बीच में अगर मैं देखूं 13, okay, 26, ठीक है, 39, वेरी गुड. सिंपली एक और देखा जाएगा, इट इज गोइंग टू बी द 52. हियर व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यू आर सीइंग मल्टीपल्स ऑफ 13, मल्टीपल्स ऑफ 13. सिंपली ओके, 13 पहले 13 मल्टीप्लाइड बाय 1, 13 मल्टीप्लाइड बाय 2, 13 मल्टीप्लाइड बाय 3, या फिर इसका जो डिफरेंस बेसिक था यहां पे 13, एंड देन सिंपली दिस 13 मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 2, multiplied by 3, one more multiplied by 4, that is going to be the 52. So 52 you need to add, आपको यहाँ पे add करना पड़ेगा. 80 plus 52 we are going to see guys, it is going to be the 132. ये तो अभी level first questions ही है. Okay, अभी tough नहीं आया, because you are going to solve some of the questions यहाँ पे series of series रहेगा. Okay, double series 3 दफा भी आपको देखना पड़ेगा, until and unless you are going to find some answer. Now try to solve this one.
It's a very easy question, guys. If I see 105, 104, then up to 103, then हमें यहाँ पे लिखने को मिला 96. Okay, you have to look at this one. Okay, try to solve this one. Find the missing term. ये यहाँ पे बता दो क्या है. Try to solve this one. एक यहाँ पे relation देखो. Okay, पहले क्वेश्चन लिखा करो. Okay, you just note down these questions and then try to solve this one. Okay, you're going to see यहाँ पे difference कितना हो रहा है guys? 1 का, ठीक है, फिर कितना आ रहा है? 3 का, फिर कितना आ रहा है? 5 का. Then it is going to be the, it is going to be the 7. ठीक है, and then it is going to be the 9. यहाँ पे 7 का difference आएगा and then it is going to be the 9. That means if I look at this one, 96 minus 7, it is going to be the 89. Okay, ये पहले सॉल्व कर लो. 105, 104, has everyone noted it down? चलो, one more level first question. ये तो सबको आएगा. 5, 15, 45. Can you see this one? If I look at this one, 5 multiplied by 3 is equal to, 5 multiplied by 3 is equal to 15. Clear? 15 multiplied by 3 is equal to 45. 45 multiplied by 3 is equal to 135. This is going to be the answer. This one. Level first questions हमने इसीलिए लाए हैं because most of the people, ठीक है, जो basic से start करते हैं ना, they are not going to be comfortable with the advanced level questions. So that's why whenever I start any topic, we are going to start from the basics till we reach the advanced stage. Okay, ये solve करके दिखाओ. 2, 6, 30, 210. This one. B. How? Multiply by 5. Very good. Okay. Zara 2 multiplied by 3, right? Okay. 6 multiplied by 5. Then what you did was over here. Yes. Anyone guys? 30 multiplied by 7. Very good. And then 210 multiplied by 11. ये देख लो. Guys, here you are going to see the multiplication of consecutive prime numbers. Okay, multiplication of prime numbers. ये easy question था this one. Okay, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. Okay, try to go with the subtraction, addition, multiplication. जब मैंने कहा था when you are seeing the jump जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, नंबर काफी इंक्रीज हो रहा है. At that point of time, I told you to go with what? Multiplication. काफी कम हो रहा है, काफी घट रहा है. So at that point of time, it is going to be the division. Now once you have looked at this one, guys, जरा ये solve करके दिखाओ. Level 2 question में UPSC CSAT 2012 question. A very easy question that I believe. Okay, ये solve करके दिखाओ पहले. Find the value of x in the series. हाँ, very good. Find the value of x in the series. हाँ, what is going to be the answer? We have solved this question ना. सीधा यहां से UPSC 2012 का क्वेश्चन है. Find the value of x in the series. What we get to see, simple, यहाँ पे पहले 2 दिया गया है, then 6, then 30, then 210 x and then 30030. Simply अगर मैं देखूं यहाँ पे, so if they ask you this kind of question again in your examination, I believe at that point of time you will be able to solve this one. Okay, तो फिर से अगर ये क्वेश्चन आ जाए
तो आई होप यू विल बी एबल टू डिलीवर। सबको समझ आ रहा है? यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा। इज एवरीवन गेटिंग इट गाइस? चलो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। बहुत ही इजी है, अगर आप ये देखेंगे ना, ठीक है, ये भी एक सेंट्रल लेवल एग्जाम में पूछा गया था, बट व्हाट आई बिलीव जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं काफी इजी होते हैं। ओके, सो कैन यू सी दिस वन गाइस? 2, 10, 50, 260, 1250, 6250। ओके, एक सिंपल अगर मैं देखूं, 2 multiplied by 5 is equal to 10, 10 multiplied by 5 is equal to 50. So what should be the third one guys? यहाँ पे 50 multiplied by 5, that is going to be the 250. Find the wrong term in the series. The wrong term in the series is going to be the 260. And if I look at this, जब मैं यहाँ पे 250 देखता हूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ, वो आ जाएगा मेरा 1250। बहुत ही इजी है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एवरीवन गेटिंग गाइस? सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड। ओके, जरा ये करके दिखाओ। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। गाइस कैन यू सी दिस वन? काफी घट रहा है, दैट मींस यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा था मल्टीप्लीकेशन, नाउ यहाँ पे काफी कम हो रहा है, so we can go with the division। करके दिखाओ जरा। ओके, find the missing term in the series। so you have been given the options 8, 7, 6 and 5। okay, अपनी अपनी जगह पे साइलेंट रहो। try to solve this one। you have been given the time of 30 seconds। try to solve this one। कुछ समझ आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? कोई नहीं, एट द एंड आ जाना, ठीक है? मैं यहीं पे हूँ, आई एम हियर ओनली। Has anyone solved this one? Very good। Come on guys, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड क्वेश्चन ही है, उतना ज्यादा टफ है नहीं। हिंट दे दूं? थोड़ा हिंट दे दूं? हाँ, हिंट दे दूं गाइस? कैन आई गो विद सम हिंट? हाँ हाँ, वेरी गुड। लेट्स सी आंसर क्या आ रहा है। हाँ, व्हाट इज द आंसर? 6। ओके, एनीवन गोइंग विद 6? ओके गाइस, कैन यू सी दिस वन? 5040, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? 720। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? इट इज 120। वेरी गुड। सो इफ आई लुक एट दिस वन गाइस, 5040, यहां पे डिवीजन हो रहा है। ओके, सो इफ आई लुक एट दिस वन, अगर मैं इसे 5040 को 7 से डिवाइड करूं, आई एम गोइंग टू गेट 720। ठीक है, कितना आइडिया मिला सबको? नाउ आफ्टर दैट इफ आई लुक एट दिस वन, 720 to 120, 720 divided by 6 is equal to 120। clear? So that means first you have to divide by 7, then you have to divide by 6. Now you are going to go with the division by 5. So if I look at this one guys, 120, okay, divided by 5, what you are going to see? You are going to see 24. Now 24 is given over here. So now division by 7 first, then division by 6. ठीक है? Then we are going to have division by 5. Now it is the time to go with the division by 4. That means 24 divided by 4 is equal to 6. Clear? So यहाँ पे जो missing term है, the answer is going to be 6. Now 6 divided by 3, it is going to be 2. ठीक है? Everyone got it?
सबको आइडिया मिला? ओके, फिर से देखो 5040 was given, 720 was given, 120 was given, 24 was given. Now dividing 24, हमने ये देखा था पैटर्न was first divide by 7, then guys divide by 6, then divide by 5. Now the division should be by 4. So because when we had gone with that, जब हमने वो फिर ले लिया, we got an answer. The answer was 6. Find the missing term in the series. Moving forward, looking at the level second questions only guys. Okay, जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ. यूपीएससी का PYQ है. It is the 2012 क्वेश्चन. ओके, कभी कभार क्या होगा, you're going to see there is going to be the addition by 2 comma multiplication by 2. Okay, addition by 2 comma division by 2 or division by 3, whatever. यहां पे भी ऐसा कुछ सिनेरियो है. देख लो जरा पहले, what is the scenario over here, what is the scene? What is the answer? ना फिर से देखो, look again. Find the missing term in the series. You have to look at this one. See here, 48 and 24 है. So can I see 48 comma 24 comma 72 comma 36. If I look at this one guys, can I see यहाँ पे division हो रहा है. ठीक है, 48 divided by 2 is equal to 24. Now 24 72, can you see this one, यहाँ पे multiplication हो रहा है. ठीक है, by 3. Can you see this one? Okay, 24 multiplied by 3 is equal to 72. Over here as well, when I look at this, जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 72 and 36 के बीच में, यहाँ पे हो रहा है फिर से division by 2. Is everyone getting it? Now after 36, what I am having guys? 108. So if I look at this one, 36 को 3 से multiply करूं, it is going to give me the 108. Can you see this one? Divide by 2, multiply by 3. Divide by 2, multiply by 3. Can you see this one? Division by 2 and then multiply by 3. Division by 2, multiply by 3. So again यहाँ पे क्या होगा? Division by 2. 108 divided by 2. The answer is going to be the 54. So this is going to be the answer. ये CSAT का PYQ था 2012. ओके, सो उतना ज्यादा टफ है नहीं, बस आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा यहाँ पे कि what is happening. Whenever you are solving any question, okay, try to find some relation over here ना. यहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ रिलेशन है, अगर ना निकले इनके बीच में रिलेशन, so again you are going to find the series within a series, a series of series, क्योंकि बैंकिंग वाले एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल जो एग्जाम्स होते हैं. बट व्हेन वी लुक एट द सीसैट पेपर, यहाँ पे सीरीज वाले क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, एवरीवन गॉट इट? किसी को डाउट यहाँ पे? मूविंग फॉरवर्ड गाइस, यू आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन. फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज. द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इज फाइंड द रॉन्ग टर्म. पहले क्वेश्चन लिखा करो एंड देन उसके बाद ट्राई टू सॉल्व दिस. एक दफा लिख लो क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन ये देखते देखते ही बनना चाहिए. ओके, इतना प्यारा क्वेश्चन है तो देखते देखते ही बनता है इसका. यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म. गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. You have to find the wrong term. You have to find the wrong term in the series.
डन? कुछ समझ आ रहा है किसी को? व्हाट इज हैपनिंग विद दिस क्वेश्चन? एनीवन? एक दफा आइडिया लगा लो यहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 75, 79, फिर 72, फिर 80, कुछ बन नहीं रहा यहां पे। ऐसा ही लग रहा है ना कि कुछ बन नहीं रहा। डू वन थिंग ना, पहले का टर्म यहाँ पे बीच का टर्म स्किप कर लो, क्योंकि ये सीरीज विद इन अ सीरीज चल रहा है। ठीक है, दो सीरीज चल रही है यहाँ पे। पर इफ आई लुक एट दिस वन गाइस, कैन आई सी 75, 72, 72, 69 एंड देन 66? कैन यू सी दिस वन? ये वाला 75 to 72, कैन यू सी दिस? -3 हो रहा है। ठीक है, 72, 69 -3 हो रहा है, देन 69, 66 -3 हो रहा है। तो इन गाइस एक सीरीज में क्या हो रहा है? वी आर हैविंग -3, -3, -3। नाउ द सेकंड वन 79, 80, कुछ नहीं बन रहा है यहां पे। बट इफ आई लुक एट दिस वन 80 to 83 +3 हो रहा है। ठीक है, 80 to 83 +3 हो रहा है ना। द नेक्स्ट वन इफ आई सी, यहां पे डेफिनेटली 86 आएगा, तो +3 यहां पे एक और सीरीज में चल रहा है। बट यहां पे रॉन्ग टर्म कहने को कह रहे हैं, दैट मींस 80 से जो पहले ये वाला टर्म होगा दिस वन, यहां पे भी -3 होगा। दैट मींस 80 -3, okay, that is going to be the 77. Yes, 77 +3. So this is the wrong one. Let me go with this one. जो 79 है ये wrong है. In place of this there should be 77. जरा देख लो, अब 75 है, ठीक है, then there was this 79 is given, then we are having 72, then 80, then what we are having guys? Anyone? 69. तो यहां पे पैटर्न फॉलो हो रहा है -3 का, -3, बट ओवर हियर यहां पे +3 होना चाहिए था। सो हियर इन प्लेस ऑफ 79 द आंसर शुड हैव बीन, ठीक है, 77 यहां पे होना चाहिए था। तो सीरीज विद इन अ सीरीज देखने को मिल रहा है। एवरीवन गॉट इट नाउ? तो रॉन्ग टर्म कौन सा है यहां पे? रॉन्ग टर्म है 79. Okay, kindly remember this. Now, once we have looked at this one question, okay, ये solve करके दिखाओ। Level 2 question ही है। We have not gone to the level 3 now. Level 2 question, one more. Find the wrong term in the series. Right? फिर से I am going to give the time for 40 seconds. We are having 258, 130, ठीक है, 66, 34, 18, 86। आपसे पूछा गया है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। रॉन्ग टर्म निकाल के देखो। ओके, रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। कुछ डिवीजन हो रहा है, फिर यहां पे एडिशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, नहीं, रॉन्ग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। बी 66, नो, कुछ और रॉन्ग टर्म है यहां पे। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। 258 है, एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? 130। तो इनके बीच का क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? कुछ डिवीजन हो रहा है, फिर एडिशन हो रहा है। यहां पे 130 को डिवाइड किया गया है, फिर ऐड किया गया है। 66 को डिवाइड किया गया है, फिर ऐड किया गया है। ठीक है, 34 को डिवाइड किया गया है, फिर ऐड हुआ है कुछ। 18 को डिवाइड किया जाएगा, फिर ऐड किया जाएगा कुछ। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस। 10 more seconds. 10 more seconds. 10 सेकेंड्स और दे दिए। यहां देखो 258 गाइस डिवाइडेड बाय 2, कैन यू सी दिस वन? कितना हुआ? 129। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? 258 डिवाइड बाय 2 +1 हो रहा है फिर। ठीक है, दैट मीन्स 129 + 1 इज इक्वल टू 130। यही हो रहा है ना?
130 डिवाइडेड बाई 2, 130 को डिवाइड कर लो 2 से, कितना हुआ? यस 65, 65 प्लस 1 कितना हुआ? इट इज गोइंग टू बी द 66, ये वाला। सिमिलर पैटर्न 66 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 33, 33 प्लस 1 कितना आया? 34, यही है ना। 34 डिवाइडेड बाई 2 17, 17 plus 1 18. Now guys, what should happen? 18 divided by 2 कितना आया? 9. So here it should be 9 plus 1. तो यहां पे होना चाहिए था 10, बट यहां पे क्या दिया गया है? 8. So guys, remove this. Okay, because if over here अगर 10 होता, so 10 divided by 2 5, 5 plus 1 6. ये तो करेक्ट है अपनी जगह, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ आई लुक एट दिस वन, 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 18 डिवाइडेड बाई 2, यस 9, 9 प्लस 1 10. हियर इट शुड हैव बीन द 10. सबको आइडिया मिला यहां पे? ओके, दिस वाज द लेवल सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट मी सी whether you will be able to solve this one or not. Okay, find the next term guys. Next term आपको देखना है यहां पे. Find the next term like this. Question दिया गया है. We have been given 4, 8, 28, 80, 244. Find the next term. ये टर्म देख लो एक दफा. ये टर्म देख लो, ये सीरीज देख लो. ओके, 4, 8, 28, 80, 244. फाइंड द नेक्स्ट टर्म. हिंट दे दूं? हिंट दे दूं गाइस? ओके, 3 का कुछ यहां पे रोल है, 3 रेज्ड पावर n, उसका कुछ रोल है यहां पे. ओके, 3 का कुछ रोल है यहां पे. कभी ठीक है ऐड किया जा रहा है, कभी सबट्रैक्ट किया जा रहा है. 3 रेज्ड पावर n, ओके, प्लस -1 ऐसे करके है कुछ. सो इफ आई लुक एट दिस टर्म, ओके, 3 रेज पावर 1 प्लस 1 हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द 4. सेकेंड टर्म 3 रेज पावर 2 minus 1, that is going to be the 9. Can you see this one? पहले +1 हो रहा है, फिर -1 भी हो रहा है. थर्ड वन अगर मैं देखूं, इट इज गोइंग टू बी द 3 रेज्ड पावर 3, ओके, यहां पे +1, that is going to be the 27 plus 1 is equal to 28. ठीक है? What will happen with the 80? यहां देखो, 3 raised to power 4, ठीक है, -1. Guys, what it is going to be? Anyone? Yes, 3 raised to power 4, 81 minus 1 is equal to 80. The next one is 3 raised to power 5. Very good. Okay, what is going to be the next term then? Because यहां पे क्या है, 3 raised to power 5 is equal to 243. 3 raised to power 5 is equal to 243 plus 1 is equal to 244. Okay. Now 3 raised to power 6 कर लो जरा. 3 raised to power 6, 7. Very good. 3 raised to power 6, okay, but यहां पे क्या होगा, -1 या +1? -1, okay, that is going to be the 7 to 9 -1
is equal to 728. So this is going to be the next term. So guys, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, you need to have an idea. Okay? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बैंकिंग वाले सेक्टर में देखने को मिलते हैं. मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिले. सो 2 का क्यूब हो, 3 का क्यूब हो, ठीक है, 4 का क्यूब हो, इन सभी का आपको आइडिया होना चाहिए. जैसे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओके, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. स्क्वायर में आपको 20 तक पता होना चाहिए. जैसे 14 का पूछ लिया, 14 स्क्वायर 196, 13 स्क्वायर ओके 169, 15 स्क्वायर 225, ये पूरा माइंड में होना चाहिए, क्यूब एज वेल एज स्क्वायर. तो इन्हीं के साथ, इन्हीं नंबर्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा. सो व्हेन देयर वाज दिस ओके 3 रेज्ड पावर 1, ओके, बस ये पहली टर्म है ना, n इज इक्वल टू, ये टर्म है यहाँ पे, ओके, फर्स्ट टर्म 3 रेज्ड पावर 1 प्लस 1 आ गया आपका 4. सेकंड 3 रेज्ड पावर 2 माइनस 1 हो रहा है, 3 रेज्ड पावर 3 प्लस 1. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 3 रेज्ड पावर n प्लस माइनस 1 यहाँ पे देखने को मिल रहा है. Once you have looked at this one guys, okay, अगर कल अब इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, I hope you will be able to solve that. Moving forward, ये सॉल्व करके दिखाओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. 0, 6, 24, 60, 120, 210. Find the next term. कुछ यहाँ पे क्यूब का है और जो नंबर है वही फिर यहाँ पे सबट्रैक्ट भी किया जा रहा है. ओके, देख लो. जैसे ऐसे लगे ना कि 24, 6, 60, 120, कुछ यहाँ पे क्यूब्स का देखने को मिल रहा है. ओके, ये नंबर्स जो है आसपास है. यहां देखो गाइस, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है. 2 cube is equal to anyone guys? Yes, 8. What is going to be the 3 cube? 27. सबको पता है ना ये. What is going to be the 4 cube? 64. What is going to be the 5 cube? 125. What is going to be the 6 cube? It is going to be the 216. तो इनके साथ कुछ यहां पे डील किया जा रहा है. I am having 0, I am having 6, 24, 60, 120 and 210. अब यहां पे नेक्स्ट टर्म है, बताओ what is going to be the answer? Yes, 336. How? Very good. Okay, very good. Look here guys, ये जो है 0, it is 1 cube minus 1, that is equal to 0. Clear है यहां तक? What is the second term over here guys? It is 2 cube minus 2. 2 cube is equal to 8. 8 minus 2 is equal to 6. आ गया ये term. Third, it is 3 cube minus 3. That is equal to 24. यहां तक क्लियर हुआ सबको? 60. 60 is going to be the 4 cube minus 4. 64 minus 4 is equal to 60 only. ठीक है. Similarly, 5 cube minus 5, 6 cube minus 6. The next term, it is going to be the 7 cube minus 7. So it is going to be the 7 cube is equal to 343 minus 7. That is going to be the 336. This is going to be the answer. Okay, everyone got it guys? आइडिया मिल रहा है सबको? चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, जरा ये सॉल्व करके दिखाओ. फाइंड द रॉन्ग नंबर. फाइंड द रॉन्ग नंबर. रिलेशन देखा करो पहले. फाइंड द रॉन्ग नंबर.
रॉन्ग नंबर देख लो। टेन और सेकेंड्स दे देता हूं, 10 more seconds to you people. B 13 how? माइनस ओके अच्छा वैसे कर रहे हो, हम दूसरा एक एंगल इसमें लगा लो, इसमें एक और एंगल है जो फॉलो कर रहे हो ना, तो दिखाओ कैसे किया। ओके शो मी। I have to subtract 14 from them. 54 फिर 26 कैसे है, नहीं 55 में से 14 निकालो, वो कितना हुआ 41, ठीक है 14 का तो नहीं बन रहा, हाँ कुछ और है। ओके ट्राई टू सॉल्व दिस वन। यस टू या 4 + 1 यहाँ पे आ जा रहा है सर, इसका नहीं हो रहा है, 5 का यहाँ पे हो रहा है। दूसरा एक एंगल है इसमें। गाइस लुक हियर, यहां देखो, जब वैसे रिलेशन ना बने, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक वो तो लेवल फर्स्ट था, वो सबको आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू शुड हैव एन आइडिया, कैन यहां देखो 6 into 9 is equal to 54 plus 1 is equal to 55। मिल गया आपको ये टर्म, कौन सा टर्म मिला, ये टर्म 6 into 9, ठीक है, प्लस 1। सिमिलरली इफ आई लुक एट दिस, ये 26, कैन यू सी दिस वन, 55 है यहां पे, 5 into 5 plus 1 is equal to 26। क्लियर, 5 into 5 25 प्लस कर लिया 1, it is going to be the 26। One more, if I look at the 26, ठीक है, 2 into 6 किसके बराबर हुआ, yes anyone guys, 2 multiplied by 6 is equal to 12, 12 plus 1 is equal to 13, that is going to be this one। now यहां पे क्या होना चाहिए, 1 into 3 किसके बराबर हुआ, 3 plus 1 that should be equal to 4। so यहां पे रॉन्ग टर्म है 5, in place of 5 यहां पे 4 होना चाहिए, as simple as that। okay everyone got it guys, आइडिया मिला इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, okay first let's have an idea regarding the type 2 questions, that is going to be the letter series। for the letter series आपको माइंड में ये बिठाना है, ठीक है, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, okay and to be precise guys यहां देखो, whenever you are going with this alphabet series ना, याद रखिएगा, okay you have to remember some mnemonics as well। for example 6 6, can you see this one, okay सबसे पहले ये भी याद रखिएगा, E J O T and Y, इजोटी। E किसके साथ जाएगा, 5 के साथ, J किसके साथ जाएगा, 10 के साथ, O किसके साथ जाएगा, 15, T 20, Y 25। ओके सो ये माइंड में बिठा लेना, EJOTY, ओके T20 जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, ओके सिमिलरली E5 याद रख लो, ओके G7 कंट्रीज याद रख लो, और यू कैन गो विद मैं 13, ओके और लाइक M for 13 लाइक दिस, ओके 12 को फिक्स कर लो यहां पे, L से 12 डन, ओके सिमिलरली यहां पे K11 जैसे होता है ना, खिलाड़ी 11 या फिर टीम में जो 11 होते हैं, सो विद दैट यू कैन रिमेंबर दिस। So looking at the letter series guys, ये जो position है alphabets का, it is going to be of utmost importance। Once you have looked at this one, okay, जरा ये solve करने की कोशिश करो। Find the next term in the series A, D, G, J। What is going to be the next term? Level first question है, बहुत easy। हाँ
क्या आएगा? M और L. Who said L? M? पक्का M? चलो ठीक है. What is happening over here? Okay, यहां देखो ADGJ, यहां पे you can simply solve it like this. यहां देखो AD like this. जंप कितना हो रहा है? +3. ओके, ADGJ and simply it is going to be the M +3. Yes, M is going to be the answer. So this is going to be the letter series. So ये easy है. चलो ये तो level first था. Let me see with next questions what you are going to do. Okay, ये solve करके दिखाओ. UPSC CSAT 2012 का क्वेश्चन है. ओके, BEH KNQ TWZ. ओके गाइस, आपको ये बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा. यहां देखो, पहले यहां देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, ओके, माइंड में बिठा लेना हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट. यहां देखो, पहले ऐसे हमेशा किया करो, B E and H. ठीक है, फिर ऐसे जाया करो लाइक दिस. यहां पे जाया करो K N and Q. ठीक है, and then you can go with the T, you can go with the W and you can go with the Z. फिर उसके नीचे देखना है कि क्या आएगा. Look at the pattern. जैसे ये बना लिया ना, ठीक है, B E H K N Q T W Z. अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा. देखो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है यहां पे. हाँ, पता नहीं अलार्म अभी किसने लगा लिया है. ठीक है चलो, ये यहां पे लगा दिया सबने. यहां देखो गाइस, BEH, ओके, KNQ. लुक हियर, जरा क्या था, जरा फिर से बताओ. ओके, जरा +9 हो रहा है क्या? +9 +9 +9 वही हो रहा है. B to K देख लो, बड़ा +9 हो रहा है. +9 +9 ये हो रहा है ना. ठीक है, फिर से +9 +9 +9 हो रहा है. एंड सिंपली देख लो अब उसके बाद क्या आएगा. BEH KNQ. यहां देख लो ना, BEH KN and Q. जरा देख लो, B का क्या है? 2. ओके गाइस, व्हाट इज फॉर K? इट इज गोइंग टू बी द 11. दैट मींस +9. क्लियर हुआ यहां तक? B से लेकर K तक कितना है? +9. सेकंड, E to N. What is the E guys? It is 5. Okay. What is the N over here? It is 14. That means +9 यहां पे फिर से होगा. थर्ड वन, H to Q. What is the value over here? यहां पे 8 है. और Q का वैल्यू गाइस जरा देख लो, 17. ओके, फिर से 9. So that means +9 +9 +9 हो रहा था. नाउ जब हमने ये देख लिया, लुक हियर, TWZ. जरा यहां पे भी +9 लगा लो. फिर कौन सा ऑप्शन आ रहा है? TWZ. +9 लगा लो यहां पे. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, TWZ. TWZ +9 +9 +9. करो जरा, ट्राई टू सॉल्व दिस वन. ओके, T का कितना है गाइस? 20. ओके, एंड देन इफ आई सी व्हाट इज द W गाइस, W का वैल्यू देख लो, 23. ओके, एंड देन Z का वैल्यू 26. ओके, सो इफ आई लुक एट दिस वन गाइस, 20 + 9, यहां तो 6 आएगा पहले, या 5 जैसे होगा, 6 होगा, गया Z तक. फिर आएगा A B and C. दैट मींस +9 यहां पे पहले C आएगा. सिमिलरली इफ आई गो विद द W, यहां पे 3 एंड देन फिर 6. दैट मींस यहां पे आएगा F. ओके, CF. एंड गाइस व्हाट वाज द वन मोर? यहां पे आएगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी द I.
this one CFI. Everyone got it? सबको समझ आया? +9 and +9. Once you have looked at this one, okay, जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ. Find the wrong term in the series. हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट लेट्स गो विद दिस +9 ये थोड़ा इजी था यहाँ पे. गाइस यू गो विद दिस वन. यहां देखो, फाइंड द रॉन्ग टर्म. जो मैंने मेथड सिखाया ना वैसे ही कर लेना. लाइक यू आर हैविंग दिस आर यू, अब इसको ऐसे लेके जाओ पहले, ठीक है. यू आर गोइंग टू हैव द यू बी. पहले इनका पैटर्न देख लो, उसी बेसिस पे यू हैव टू गो विद द, ठीक है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. आर यू एंड फॉर दिस गाइस आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए जो अभी मैं आपको बता रहा था. A1, B2, C3, D4. ओके, यहां देखो गाइस, लुक हियर. आर यू से क्या हो रहा है? यू बी. लुक हियर, ट्राई टू सॉल्व दिस वन गाइस. आर यू बी, यही था ना? यही था ना? ओके, जरा यहां देखो पहले. लुक हियर गाइस, आर का वैल्यू 18, यू का वैल्यू 21, यू का वैल्यू वाई नहीं, यू का वैल्यू 21. ओके, तो यहां पे हुआ +3. ओके, इफ आई लुक एट द यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू गाइस? इट इज 21. एंड देन इफ आई लुक एट द बी, इट इज गोइंग टू बी द 2. दैट मींस यहां पे +7 हुआ है. You have got an idea now. So फिर से आएगा +3, फिर से आएगा +7. Okay. So the next term should be xi. What is the next term over there? Next term क्या आएगा जरा देख लो. xi. आइडिया मिला? फिर से बताओ गाइस. हाँ, यहां देखो, यहां लुक हियर. आर यू बी. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यहां देखो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बता दीजिए, ओके, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज. सो इफ आई लुक एट दिस वन, आर यू बी, देखा ना हमने, वी सॉ इट इज गोइंग टू बी द +3 +7. सो इफ आई लुक एट u +3, ये को क्या आना चाहिए? ठीक है, u x y, देखा ना अभी. लुक हियर, ओके, u जब मैंने देखा यहां पे u w, या ना, सॉरी, v w एंड x was 21 + 3 इज इक्वल टू 24. दैट मींस यहां पे x आना चाहिए रादर देन गोइंग विद द z. तो यहां पे आएगा x एंड यहां पे आएगा आपका i. एंड देन फाइनली x के बाद अगर मैं देखूं, ठीक है, x y z and then a, yes, a correct है. And then if I go with this one, even p is correct. That means ये वाला term, that is zw. This is the wrong term over here. Because pattern क्या था? Pattern था +3 +7. So r u and b. एक दफा अच्छे से समझ लो ये पहले. Okay. आराम से पहले ये क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? द डिमांड वाज दैट यू हैड टू फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज. सिंपल पैटर्न देखना था, आर यू बी एंड देन z d a b एंड d w. एंड व्हेन आई लुक्ड एट दिस वन गाइस, हमने देखा आर यू बी तो वो पैटर्न फॉलो कर रहा है. r +3 आ गया u +7 आ गया हमारा b. तो फिर सेम पैटर्न होगा, फिर +3 +7. That means if I look at this one guys, यहां पे u +3 कर लूंगा, I am going to have the x. b +7 कर लेंगे, we are going to have the I. Okay, so the wrong term was ZD. Everyone got it guys? Moving forward, okay, let's have an idea of continuous series. guys, इसके रिगार्डिंग पहले समझ लो. When I look at the continuous series ना, यहां देखो, the series are going to look like this: ABC, ABC. Okay. Now, for example, series are going to look like this: AB, AB,
AB, AB, AB. So you're going to see alphabets जो है यहाँ पे continuously reappear होंगे. Okay? So regarding the continuous series जो मैं यहाँ पे बात कहना चाह रहा हूँ वो माइंड में बिठा लेना. First what you should do guys, अगर ABC, ABC, ABC या फिर ABC ऐसे करके दिया गया है, what is the total number of alphabets over here? It is going to be 12. 3, 3, 3 और 3. ठीक है. सो जैसे ये सीरीज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया लाइक दिस, ओके, आपसे दिया गया फिर लाइक दिस, ओके, तो लाइक दिस सीरीज है यहां पे, यू हैव टू ओके फिल दीज ब्लैंक्स ओवर हियर. तो जब मैं यहां पे देख रहा हूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, याद रखिएगा ये काउंट किया कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं. अगर अल्फाबेट्स आ गए 15 तो इनका पेयरिंग बन सकता है, या तो ये होगा 3 into 5 या फिर ये होगा 5 into 3, यही रहेगा ना. इफ इट इज 12, ठीक है, या तो ये 3 पेयर के 4 ग्रुप बन जाएंगे 3 into 4, या फिर 4 अल्फाबेट्स के 3 ग्रुप बन जाएंगे. अगर अब ये 18 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमें देखने को मिल रहा है लाइक दिस 18. सो गाइस 18 का अगर मैं देखूं, it can be 3 into 6 or 6 into 3 like this. Continuous series माइंड में बिठा लेना. सेकेंड थिंग, अगर आप ऐसे भी समझ ना आए तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सिंपली जो है ऑप्शंस को यहां पे पुट कर सकते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट कहीं कोई सीरीज तो नहीं बन रहा. ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ओके, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी लाइक दैट. तो जरा ये देखो, in the following series some letters are missing, कुछ letters यहां पे missing है. Similarly हम ये देखते हैं from the choices select the choice that gives that letters that can fill the blanks in the given sequence. ये देख लो. यहां देखो पहले, what is the number of alphabets? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. That means यहां पे 15. सो दो पॉसिबल कंडीशंस है, या तो 3 into 5 होगा, 3 का बन जाएगा लाइक दिस, ओके, या तो फिर 5 into 3 होगा, 5 का बन जाएगा. ओके, मैं यहां पे आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो कि कैसे यहां पे सीरीज बनेगा. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस वन. हाँ? कौन सा वाला पार्ट आएगा? वेरी गुड. हाँ, कौन सा ऑप्शन आएगा? जरा लेट मी पुट दिस ऑप्शन ओवर हियर. ओके, सबसे पहले क्या है यहां पे? यहां पे क्या है सबसे पहले गाइस? बी है ना. ओके, मान लो यहां पे बी लगा दिया. ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है यहां पे? सेकंड ऑप्शन ए, यहां पे ए लगा दिया. थर्ड सी, फोर्थ वन यहां पे सी आ रहा है ना. फिफ्थ बी, एंड देन गाइस सिक्स्थ क्या आ रहा है? फिर से बी. कैन यू सी दिस वन? एक पैटर्न सा बन रहा है यहां पे, सीरीज फॉलो हो रहा है. ओके, व्हाट इज दैट गाइस? इट इज गोइंग टू बी द एबीसी 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 एंड एबीसी. सो प्लीज रिमेंबर दिस. मतलब जो हमने यहां पे देख ही लिया है. ओके, चलो. सो एबीसी एबीसी एबीसी, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस वन. ये क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा. कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर. ओके, ये सॉल्व करके दिखाओ. Which of the following groups of letters will complete the given series? ओके, इससे पहले पूरा. हाँ, ये Z यहां पे X I आना चाहिए. ठीक है, हाँ, तो तब जाके आ रहा है ना. U से +3 कर लो. U +3 क्या आ जाएगा?
ठीक है, VWN X, तो दैट्स वाई यहां पे X होना चाहिए था rather than going with the ZD. ये रॉन्ग टर्म है यहां पे, we had to find the wrong term in the series. ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था, +3 +7 +3 +7 U+3, वो क्या आ जाएगा X, बट यहां पे द क्वेश्चन जो यहां पे दिया गया था, टर्म जो दिया गया था वो दिया गया था Z, तो ये तो रॉन्ग था. ओके, नाउ समझ आ गया, वेरी गुड. ओके, जरा ये सॉल्व करके दिखाओ. हाँ, which of the following groups of letters will complete the given series? Which of the following groups of letters will complete the given series? Okay, जरा काउंट कर लो कितने आ रहे हैं. यहां देखो जरा, लुक हियर गाइस, यहां देखो पहले, ये देखो पहले सीरीज में कुछ BCAB आ रहा है, कुछ AB फिर से आ रहा है यहां पे, कुछ यहां पे फिर से BC आ रहा है, BC आ रहा है, दैट मींस कुछ ऐसा ही बन रहा है, BCAB करके. फिर से देखो BC आ गया यहां पे, ठीक है, फिर से BC, फिर से BC, फिर से यहां पे AB आ गया. तो इफ आई लुक एट दिस वन, यहां से मैं 1 मिनट में आंसर निकाल सकता हूं, 10 सेकंड. जरा कौन सा ऑप्शन दे दूंगा फिर, बाय लुकिंग एट दिस वन. जरा डी का एक दफा देख लो. ओके, यहां पे एक दफा C पुट कर लो, आ गया BCAB आ गया ना, BCAB, फिर से BC है यहां पे. ओके, फिर से यहां पे A लगा दी, बन गया ना, BCAB BCAB BC, यहां पे फिर से B आएगा, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी दिस वन, सो आई एम गोइंग विद दिस. तो ये माइंड में बिठा लिया करो कि यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस एज वेल, कि कौन सा पैटर्न बन रहा है वहां पे. ओके, सो अगर कंटिन्यूअस सीरीज में कल कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, आई होप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस यहां से देखने को भी मिले. ओके, जरा ये सॉल्व करके दिखाओ पहले, देन वी विल हैव अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स. ये देखो पहले, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट फॉलोज सम अरेंजमेंट. ओके, ये देख लो, CSAT 2019 का क्वेश्चन है ये पहले सॉल्व करके दिखाओ. कुछ पैटर्न बन रहा है. ओके, यू कैन यूज द ऑप्शंस एज वेल. ऑप्शंस को आप यहां पे पुट करके भी एक कुछ आंसर निकाल सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पे फटाफट से देख ले उस समय पे, लेट्स गो विद द ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी द CA. ओके, फिर A आएगा, फिर CCAA. ओके, एंड देन फिर B आएगा. तो यहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा. ठीक है, इफ आई गो विद द ऑप्शन B ओवर हियर, देख लो पहले C आएगा, C के बाद CCACC, कुछ मिल रहा, कुछ यहां पे पहले ही एक ही अल्फाबेट से हमें देखने को मिला. ओके, एंड देन इफ आई सी, फिर आ रहा है यहां पे AA लाइक दिस. ओके, एंड देन फिर B, फिर आ गया फिर से AA. ठीक है, हाँ, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. यहां से ये निकल रहा है. फिर आ गया आपका BB. ओके, फिर आ गया CBB, BBCBB लाइक दिस. ये यहां पे सीरीज पैटर्न बन रहा है, दिस वन. ओके, सिंपली ना उस समय पे आपको ऑप्शंस के थ्रू भी देखना पड़ेगा, या अगर वैसे ही बन रहा था तो वैसे भी मिल रहा था, लाइक दिस. यहां पे कुछ आ रहा था CCAA. ओके, फिर ABC, कुछ B देखने को मिल रहा था. सो आई विल गो विद ऑप्शन B. ओके, ये समझ में आ गया. ठीक है, कर पाओगे उस समय पे ये टाइप का क्वेश्चन. जरा एक और कर लो फिर यहां पे, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन कर लो पहले आप.
कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही। हाँ जरा ये सॉल्व करके दिखाओ, ये यूपीएससी सीसैट 2021। टेक योर टाइम, आराम से देख लो, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। कुछ ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है। ऑप्शंस को एक दफा इसमें पुट कर लो। व्हाट इज द टाइम गाइस? टाइम क्या हुआ? हाँ 5 बज गए इतने ही टाइम में? चलो कोई नहीं, एक काम कर लो, फिर रेस्ट कर लो अब, ठीक है? अब हम कल इसका पार्ट 2 कर लेंगे, ठीक है? ओके हैव अ रेस्ट। चलो कोई नहीं, एक और ट्रिक लेके आता हूं मैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ये बताओ, ये जो क्वेश्चंस है ना जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये होमवर्क कितने क्वेश्चंस दे दूं? नहीं 50 ज्यादा हो जाएगा, 50 यू नॉट बी एबल टू डू, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स है ना। कितने क्वेश्चंस दिया करूं? हाफ एन आवर का ये वर्कआउट, ठीक है? होमवर्क हाफ एन आवर का, ठीक है ना, कि 1 आवर का? चलो ठीक, नहीं 30 में मैं देखता हूँ। ओके हाफ एन आवर का आप ये काम करके आइए। एंड वन मोर थिंग, जो मैं टॉपिक देख रहा हूँ ना, एक दफा वो थोड़ा सा देख लिया करूँ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ओके वो एक दफा देख के आया करो। मैं शाम को ही, इवनिंग को ही आपको बताया करूंगा कि दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक। ओके ये जो रीजनिंग वाला है, जैसे हम आएंगे ना सिलोजिज्म पे या फिर ब्लड रिलेशन में, वहां पे बहुत सारी आपको ट्रिक्स भी बता देता हूँ, so that it is going to be helpful for you people. Okay, so let's see you in the next session. Till then, take care. Bye bye. कर लो, प्रेस कर लो, ठीक है? डन।
वन क्वेश्चन, ओके, आराम से देखिए। पहले लगेगा कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन ना, आपको लगेगा कि कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन था ये। देख लो, you are given two identical, okay, sequences in two rows. Can you see this one? Sequence first 8 4 6 15 52 52.5 and 236. Can you see this one? And what is the next one, guys? Sequence second 5A, then it is going to be the B, then C, then D and then E. What is the question यहां से पूछा गया है आपसे? What is the entry in the place of C for the sequence second? Okay, can you look at this one? क्या पूछा गया है? What is the entry in the place C for the sequence second? कि C की जगह पे क्या होना चाहिए? If I look at the sequence first, ये भी kind of एक सीरीज देखने को मिल रहा है। So यहाँ पे 8 है, then 4, then 6, then 15 like this. If I simply look at this one, it is 8 into 0.5 is equal to 4. Simple. Then if I look at the second term, 4 into 1.5, that is equal to 6. Okay, 4 multiplied by 3 by 2. Then if I look at this one, 6 into 2.5, that is going to be equal to, guys, 15. So this is following this pattern. ठीक है। Similarly, अब अगर मैं देखूं यहाँ पे 5A, that means it is going to be the 5 into 0.5, that is going to be the 2.5. मिला 2.5, 2.5 into 1.5 मिला आपको B, and then वो जो नंबर मिलेगा उसे मल्टीप्लाई करना है फिर आपको ये 2.5 के साथ। ओके, सो ये पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो विद दैट इसका आंसर जो है इट विल बी अराउंड 9.375 समथिंग। ओके, तो ये टाइप का क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सो मे बी दे माइट आस्क यू अगेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको एक आइडिया होना ही चाहिए। इवन यू कैन लुक एट दिस वन गाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, जरा ये देख लो, 14 18 20 24 30 32। ओके, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें देखने को मिल रहा है जो नंबर्स के साथ किया गया है, तो फिर से ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स देखने को मिल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस? कैन यू सी दिस वन? 14 है, 18 है, 20 24 30 32। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नंबर। 13 प्लस 1 14, 17 प्लस 1 18, वो सारे प्राइम नंबर्स है ना। 19 प्लस 1 20, 23 प्लस 1 24, ओके, 29 प्लस 1 30, 31 प्लस 1 32। सिमिलरली 37 भी एक प्राइम नंबर है तो 38। इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। ओके, तो विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ओके, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ये बहुत ही इजी रहेगा, उतना ज्यादा ये टफ या डिफिकल्ट है नहीं। हाँ, एनीवन? ओके, तो विद प्रैक्टिस ओके हो जाएगा। एनीवन? किसी और को क्वेश्चन है यहाँ पे? पक्का? चलो ठीक है, फिर पूछो। दूसरी क्लास कब है आप लोगों की? सेकंड क्लास? चलो ठीक है, फिर रेस्ट कर लो तब तक।